Assalamualaikum. I hope everybody's well. आज बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट बीआई की. Let me just open up Microsoft BI. And by the way, if you've not downloaded it, please do download it because ये फ्री सॉफ्टवेयर है और इसके डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन बहुत आसान है. All you need to do is go to Google and type in Microsoft BI desktop और ये खुल जाएगा. इंस्टॉलेशन के बाद ऑफ इंस्टॉलेशन वैसी है जैसे बाकी आप you would install any other thing on Windows. Let me just open up the interface first. I would like to discuss it interface और उसके बाद फिर हम डेटा क्लीन की तरफ आते हैं. Okay, let me share the screen. ये आपके सामने पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस है. एक्सप्लोर कर सकते हैं if you want to. If you do have active internet, you can go around and check these options. जिसमें पावर बीआई ब्लॉक की एक ऑप्शन है, फोरम्स है, ट्यूटोरियल्स हैं, न्यू अपडेट्स अगर हैं जैसे अभी मुझे अपडेट करने की जरूरत है, I can do that as well. पुरानी जो मैंने फाइल्स खोली हैं वो मुझे लेफ्ट साइड पे अपनी नजर आ रही. एंड इफ आई स्ट्रेट अवे वांट टू गेट data, I can do that by using this option. For now, let's just cross it out and see what Power BI is all about. तो पहली चीज जो नोट करने की है ना आपके लिए जरूरी, वो ये है कि पावर बीआई के 3 मोड्स हैं. तो 3 मोड्स कौन से हैं? एक रिपोर्ट जिसके अंदर अभी हम करंटली हैं, और जाहिर है ये रिपोर्ट का जो आपका है वो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ जाएंगे विजुअलाइजेशन की. ये हम करेंगे भी आगे जाके और कुछ आपको मैंने करवाई है ऑब्वियसली क्योंकि मैं अब वो वीडियो बना रहा हूँ तो इंशाल्लाह गाए बगाए इसको भी देखते रहेंगे. इसके अलावा ये ऑप्शन है इफ यू वांट टू गेट इनटू importing data straight away, you can do it from now, but let's just hold our horses for a minute and just see what other things we've got. ये दूसरा मोड है डेटा मोड और ये जनाब तीसरा है मॉडलिंग. ये तीनों हम करेंगे और पता चलेगा आपको कि क्या कैसे डाटा दिखता है इन तीनों के अंदर. तो हम ऐसा करते हैं, पहले कुछ डाटा ले आते हैं. तो डाटा अगर आप इसमें लाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी आपके पास 2-3 ऑप्शन है. यहाँ से भी कर सकते हैं मगर ये ऑब्वियसली सिर्फ एक्सेल का डाटा लेकर आएगा और हमारे पास बेसिकली फाइल जो है ना वर्केबल वो CSV है. तो देयरफॉर व्हाट वी रियली नीड टू डू इज गो हियर गेट डेटा और गेट डेटा में आप जाकर टेक्स्ट CSV ऑप्शन जो है ना ये क्लिक कर सकते हैं यह जगह. और अब यहाँ आप जो भी डाटा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, जहां पर भी आपकी फाइल पड़ी हुई है, मसलन अगर ये SAS 2017 raw.csv, if I want to bring this in, तो मैं ओपन कर दूंगा इसको और it should really bring in my data. Remember कि ये CSV फाइल्स हैं, ये एक्सेल फाइल नहीं है. ये this is a very common mistake that people tend to make, that they tend to think कि ये शायद CSV, क्योंकि एक्सेल जो है वो CSV भी खोल लेता है मगर बेसिकली उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. जैसे ही लोड इसने किया है ना डेटा, तो इसने लाकर हमें दिखा दिया है. इनिशियली उसने पकड़ लिया है, डिलिमीटर भी पकड़ लिया. डिलिमीटर इज हाउ द डेटा इज सेपरेटेड. और पहले 200 रोज भी उसने आपको दिखा दिए, फॉन्ट वगैरह बाकी एसकी कोड्स वगैरह भी दिखा दिए. और नीचे आपके पास 3 ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म, डेटा एंड कैंसिल. तो इफ आई कैंसिल इट, ऑब्वियसली वो लोड करना बंद कर देगा. इसको लोड करूंगा तो बगैर एडिट किए हुए वो अटैच कर देगा इसको. और अगर ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा तो आई विल स्ट्रेट अवे गेट इनटू माय क्वेरी एडिटर वेयर आई कैन रियली एडिट दिस डेटा. फ्रैंकली दिस data does need a bit of cleaning, but let's just cancel it for a moment because I need to do a few settings. आपको 2-3 चीजों का ख्याल करना है बिफोर यू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन द डेटा. और वो पहली चीज जो उसमें है वो ये है कि आपकी रीजनल सेटिंग्स ठीक होनी चाहिए. फॉर दैट there are other few settings that I would like to tweak as well.
सो फाइल पे अगर आप जाएं और ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में चले जाएं तो ये देखो ऑप्शंस हैं आपके पास, देखो ऑप्शंस में जाकर कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज डेटा लोड ऑप्शंस में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग नेवर डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस कर लें. This is advantageous because this will really allow you to think about the data itself. तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा, मगर कम से कम आपको आइडिया होगा कि डेटा कैसा है. तो ये ऑप्शन हमेशा ऑन रखिए. और इसके अलावा अगर मैं नीचे चला जाऊं रीजनल सेटिंग में, तो मेक श्योर कि रीजनल सेटिंग में आपका इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स सी दोनों जगह पर हो. ठीक है. इसके अलावा आपके बाकी सेटिंग्स मोर और लेस आर फाइन. See if there is any other automation going on. It looks okay. करंट फाइल की सेटिंग में जो डाटा लोड है इसमें आप इसको अनटिक कर दें, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप्स. ठीक है. तो इसका भी आपको फायदा होगा बिकॉज देन यू विल बी एबल टू मेक रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स योरसेल्फ. इसके अलावा रीजनल सेटिंग में चले जाएं एंड मेक श्योर कि ये इंग्लिश यूएसए हो. एक्चुअली यूएसए और पाकिस्तान का टाइम जोन का फर्क भी है और डेट फॉर्मेटिंग का भी फर्क है. इस वजह अब मसला ये है कि जो हम फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली यूएस की है. सो इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स राइट वी नीड टू मेक दिस सटल एडजस्टमेंट्स. बाकी मोर और लेस इट लुक्स ओके. तो ये पहली चीज है जो आपने करनी है. आप अप्लाई कर दे चेंजेस and you're good to go. Now we're going to bring in some data. और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मगर वैसे हम एक और चीज भी ट्राई कर सकते हैं. बजाय इसके कि गेट डेटा और टेक्स्ट में जाकर मैं इसको ओपन करूं, एक और तरीका भी हो सकता है इसको ओपन करने का. लेट्स जस्ट ट्राई दैट आउट. अगर मुझे पता है कि मैंने डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म ही करना है तो व्हाई डोंट आई गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम हियर. And now इसने query editor खोल दिया. Let me just do this again because हो सकता है कोई मिस आउट कर जाए. So instead of getting, जो कि मैं कन्वेंशनली करता हूँ, get data and xcsv यहाँ से भी खोल सकते हैं. अगर इस तरह नहीं आप खोलना चाहते तो एक और भी तरीका है फाइल्स को ब्रिंग इन करने का, और वो ये कि डायरेक्टली आप क्वेरी एडिटर में चले जाएं. वो बिल्कुल राइट एट द टॉप, देयर यू गो, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो वो क्वेरी एडिटर खोल देगा. ये देखें. I'm just going to click on it and it's going to open up my query editor. So query editor से अब मैं बआसानी अपना डेटा लेकर आ सकता हूँ. I can say that there's a new source that I want to bring in and that new source is TextCSV and there you go. Sales 2007 raw.csv ये मैं लाना चाह रहा हूँ and there you go. My data is here and I just अब मैं क्वेरी एडिटर के अंदर हूं ना, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं, बिकॉज नेचुरली उसको पता चल गया कि आई वांट टू एडिट माय डेटा. तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग अ लोड बटन हियर. सो ओके एंड देयर यू गो. ये अब आपके पास ना डेटा खुल गया. तो इफ यू हैव फॉलोड मी यहाँ तक, अगर आपने सीख लिया है तो काफी हद तक आपका जो है ना आसानी होगी आपको, because of course you need to learn as how to bring in data and all that. Let's try to edit this data as well because this doesn't look very good. बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही हैं. देखें ऊपर 2 रोज फालतू की हैं. इसके अलावा ये रो हमारी हेडर के अंदर होनी चाहिए. एन ए वैल्यूज है जो नहीं होनी चाहिए. रिपीटेड वैल्यूज भी मुझे मिल रही हैं. So this is a pretty messed up data actually. तो ख्याल में इसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए हमें. Let's try doing that. Just want to make sure that I am right here in the home tab.
and I just want to remove these two rows first. पहले ये दो रोज जो है ना, इनको कोशिश करते हैं खत्म करने की। उसका बहुत ही आसान आपके पास ऑप्शन है that you use this remove row option यहाँ पर। प्लीज नोट दैट अभी मैं होम टैब के अंदर हूँ, मैं रिमूव रोज करूंगा एंड आई वांट टू रिमूव टॉप रोज और दो रिमूव करना चाहूंगा। ये देखिए अब दो रोज जो है ना वो रिमूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज यू प्रमोट दिस हेडर्स। ये हेडर्स हैं और मैं इनको प्रमोट करना चाहता हूँ और इनको ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी बहुत ही आसान ऑप्शन है, ये देखिए यूज फर्स्ट रोज एज हेडर्स। as soon as I click this तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना इस रो के अंदर वो बेसिकली हेडर्स हैं। और ये आपके सामने हेडर्स भी आ गए, तो looks nice. The next thing that I would like to do is remove blank rows. So now there are a couple of things. एक तो ये कि अगर मैं सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा ना तो होगा ये कि सिर्फ इस कॉलम के अंदर जो ब्लैंक रोज है वो कर देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लैंक रिकॉर्ड एक कॉलम के अंदर हो सकता है हो, मगर उसी के अगेंस्ट किसी और कॉलम के अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड हो सकता है। तो वी डोंट वांट टू रिमूव दैट। So instead of selecting the entire column, I think we should just remain here, which is a row, and we could just say that we want to remove the blank rows. There you go, blank rows are gone now. Similarly, repeated values मुझे नजर आ रही है, but I am not really sure. I neither do I have the time to check whether ये similar हैं all the way or not, because this could have been a larger data. मैं simply इसको ना रो के अंदर ही रख के कहता हूँ remove duplicates. There you go. So now we're heading towards a much cleaner data. Now we do have NA values as well, and I have a complete row which is NA. Now इसको खत्म करने के लिए ना मुझे इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा और वो देखते हैं कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ना एरो के ऊपर रो के, तो ये देखिए मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। If I go down here, NA मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। So if I just click here, तो ये deselect हो जाएगा और NA की वैल्यू जो है ना वो हट जाएगी। So there is absolutely no NA value in order ID. So think this looks good now, at least for now. ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। What else do we have here? अब कुछ और काम भी हम कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कौन सी कॉलम है जो बिल्कुल बेकार है। मिसाल के तौर पे कॉलम 3 जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज इसमें ये वैल्यूज हैं, कोई यानी जेन्युइन वैल्यू नहीं, ब्लैंक्स हैं, एंडेज हैं और नल है। सो डू वी रियली नीड दिस? दैट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। आई डोंट थिंक सो। सो यू जस्ट सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, राइट क्लिक करोगे आप और कहोगे कि आप रिमूव करना चाहोगे इसको पूरे कॉलम। ऑर्डर डेट है, लुक्स ओके। ऑर्डर डेट 2 है, सेल्स का कॉलम है, रेवेन्यू का है, स्टॉक प्राइसेस, प्रोमो टाइप 1 2, रेस्ट लुक्स ओके है। मोर और लेस इट लुक्स ओके। ये प्रोमो बिन 2 है एंड इसके अंदर भी ब्लैंक वैल्यूज हैं। प्रोमो डिस्काउंट 2 है, इसके अंदर भी ब्लैंक वैल्यूज हैं। सो व्हाट यू रियली कैन डू इज, एंड इफ यू रियली वांट, आई मीन इसमें अब थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न ये है कि ये प्रोमो डिस्काउंट 2 जो है ये क्या आइंदा यूज होगा या नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू लुक इनटू। बट इफ दैट्स नॉट द केस देन व्हाट यू कैन डू इज रिमूव बोथ ऑफ दीज। ऐसे सिलेक्ट करके आप इसको ना रिमूव कॉलम कर सकते हैं। और अब आप कॉलम्स एटलीस्ट जो है ना वो दे आर लुकिंग फार बेटर देन दे वर। And lastly, what we need to do is see के data type ठीक है या नहीं, because कम से कम null values वगैरह, null values are okay by the way, we're not really too bothered about null values,
what really bothers us is NA, और इसीलिए मैं सेल्स के ऊपर आता हूँ पहले, बिकॉज ये क्लासिकल एग्जांपल बनती है कि क्यों और कैसे डाटा जो है वो चेंज होना चाहिए। नाउ अगर आप गौर करें ना, तो पहले ये जो ऊपर हेडर्स हैं उनके साथ डाटा टाइप्स भी है। तो सेल्स के साथ जो डाटा टाइप है, इनफैक्ट तमाम के तमाम कॉलम्स के साथ डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है, एंड वी नो दैट्स नॉट द केस रियली। So we need to change the data types. There are a couple of ways of doing it. There's a quick way and there is one way that really lets you deliberate. And I'm going to use the deliberation method first. तो बात ये है कि हम पहले देख लेते हैं अपने अंदाजे से कौन सी चीज क्या है। मिसाल के तौर पे ये होल नंबर्स लग रहे हैं मुझे, इसको आप टेक्स्ट भी रहने देंगे तो वोंट मैटर, बट इफ यू रियली वांट टू चेंज इट टू होल नंबर्स, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। Product ID is text, which is fine. Store ID is text, that is fine. Order date, of course, is a date. So अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसकी टाइप बदल सकते हैं इनटू डेट। मगर ये याद रखें कि ये डेट जो है ना, ये यूएस फॉर्मेट में है, क्योंकि हमने फाइल ऑलरेडी यूएस फॉर्मेट में की हुई है, therefore we have no trouble whatsoever doing this. Similarly, this is the date and we are fine with this as well. This becomes interesting because you know यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये आइडियली स्पीकिंग होनी चाहिए होल नंबर 0 1 2 3 4 व्हाटएवर द केस में, बट उसके साथ सीरीज लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो व्हाट आई विल हैव इज एन एरर एंड अ रिपीटेड एरर। और एरर की वजह ये है कि कहीं ना कहीं ये जो टेक्स्ट है उसको वो कन्वर्ट करने में नाकाम हो। See, so I need to bring in my window, just get my window of query setting and just sort of tell you what this is. एक बड़ी जो बात है माइक्रोसॉफ्ट बीआई की, वो ये है कि इसकी ये जो विंडो है ना, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ व्हाटएवर यू डू। एक्शंस इसको हम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो अगर आप देखो ना, ये सारे एक्शन, इसमें जो कुछ भी हमने अभी तक किया है ना, वो रिकॉर्ड करता गया। एक्शंस कैन बी डिलीटेड, दे कैन आल्सो बी एडिटेड। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू सी हियर, यहाँ पे सेल्स का एक्शन है जो कि बड़ा गंदा सा रिजल्ट लेकर आ रहा है। If I want to delete it, I can simply cross over. इसी तरीके से ये एरर आ रहा था यहाँ पर, बिकॉज हमने बेसिकली जो चेंज टाइप की है उसमें हमने नंबर में बदलने की कोशिश की है एक ऐसे कॉलम को जिसके अंदर टेक्स्ट है। So let me change this as well. There you go. I'm back to where I was, where I should be really. So what I need to do here is first convert this column into something that can easily be converted into numerical values. ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, I don't like it because of the obvious reasons. तो पहले हम ऐसा करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं। If I go to, let me just find that option. Sometimes even I have trouble. There are so many tools there कि थोड़ा सा मुश्किल होती है कई बार। होम पे अगर आप जाए ना रिप्लेस वैल्यूज में, तो दिस इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन दैट वी हैव। दिस इज अ लाइफ सेविंग ऑप्शन। इस पे क्लिक करो और मैं ये चाह रहा हूँ, एंड ये याद रखो कि मैंने इस कॉलम को ना पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। व्हाट आई वांट टू डू इज रिप्लेस, जहां जहां सेल्स लिखा हुआ है ना, वहां मैं चाह रहा हूँ नल वैल्यूज आ जाए, यानी ये सिर्फ 0 है, 0 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, आगे वाला सारा मामला हट जाए। वैसे ओके, now surely enough what it has done is truncated the text that I don't need, and that's brilliant. And now if I change this, and let me just see the values first, because मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये सारे whole number नहीं है। बेसिकली इसके अंदर ना पॉइंट्स भी आ रहे हैं, so these are not whole numbers. So I think it would be wiser to call them decimal numbers. Decimal numbers में convert करके देखते हैं। Yeah, sure enough, there are a few errors. And let me see why these errors exist. अगर थोड़ा इसको चेंज करता हूँ दोबारा, तो मैं वैल्यूज दोबारा देखना चाहूंगा कि कौन कौन सी। NA आ रहा है यहाँ पे, एक और प्रॉब्लम है, NA आ रहा है। और NA अगेन याद रखो, दिस इज अ टेक्स्ट,
and whenever text is converted or we try to convert text into numerical values, it's going to give us trouble. So what to do now? The simple solution is कि आप replace values पे जाके इसी column के अंदर ना NA values को बदल दें null में. So NA values are replaced by null values, and if you say okay now, this should really resolve the issue. अब आप देखें इंशाल्लाह बिल्कुल मामला दुरुस्त है, blank के अंदर आ गया वो, NA नहीं आ रहा. तो अब अगर इसको हम decimal values में convert करें तो we are good to go. There are absolutely no errors. ये आपको बिल्कुल दुरुस्त जो है ना वो सिम्स में चले गए आप इस मामले में. लोग करके देख लेते हैं, नो एरर्स व्हाटसोएवर, एब्सोल्युटली क्लीन वैल्यूज. रेवेन्यूज भी देख लेते हैं, पॉइंट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इसको भी फिक्स डेसिमल नंबर कर देते हैं. देयर आर फ्यू एरर्स हियर अगेन. लेट मी सी कि क्यों आ रहा है एरर. एनए तो नहीं आ रहा यहाँ पर. ये देयर यू गो, देयर आर एनए वैल्यूज देयर. वो एनए चूंकि टेक्स्ट है इसलिए वी नीड टू ट्रंकेट द टेक्स्ट वैल्यूज. इसको सिलेक्ट करेंगे हम, रिप्लेस इट एंड से कि एनए को रिप्लेस कर दो नल वैल्यू से. एंड नाउ इफ वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस वी शुड बी ओके. अगर हम इसको कर लेते हैं जनाब फिक्स्ड डेसिमल नंबर, तो देयर आर नो एरर्स. वी आर गुड. स्टॉक के अंदर डेसिमल नहीं आना चाहिए मेरा ख्याल में. एनए भी देख लेते हैं हम, एनए तो नहीं है यहाँ पर, एनए है यहाँ पर. और आई थिंक एनए ना हमें शायद पहले से रिमूव कर देना चाहिए. आई थिंक देयर इज अ वे आउट. लेट मी जस्ट सी वेदर आई कैन डू इट. यहाँ पे जाके अगर मैं कोशिश करूँ रिप्लेस करने की, नो don't think that's possible. चले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कर ले. Let me see whether there are any values here in the first column. So that would really allow me to remove things. Let me search NA here. चले है, ठीक है. इसमें इसके शुरू में कोई NA वैल्यू है जो मैं रिमूव करना बोल रहा हूँ यहाँ से, वो मैंने बाद में किया चूंकि इस वजह से रिमेनिंग है. एनीवे दैट्स फाइन. व्हाट आई कैन डू इज रियली कम बैक हियर. और कन्वर्ट में क्या कर रहा था जनाब, रेवेन्यू हो गया था कन्वर्ट, स्टॉक करना था. अगेन स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से NA को डिसिलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो कि उसका डिसिलेक्टेड वैल्यू के दाएं बाएं कोई वैल्यू है जो मैं यूज करना चाहता हूँ या नहीं. So therefore again I can replace this NA with blank, and now it should be okay. When I convert this into whole number होगा, let me just see. There are any points? इसमें points है, which is very strange because this really should be a whole number. There's only one value जहाँ पर ये है, तो I would like to change it into a whole number. Yes, this looks better. Because I think there's got to be some kind of a mistake because ये stock को 0.04 नहीं होना चाहिए ना. Price may will do the same. We will see if there are any NAs. Yeah, there are NAs here. So let's just replace the NAs with blank values, and I'm going to convert this into fixed decimal. There you go. Promo 1 is absolutely fine. So is promo bin 1. So is promo type 2. And now comes the interesting part. And ये अब have formatting, date formatting. You see there are two columns here. The first one is delivery date format 1 and the other one is delivery date format 2. So the first one is simple enough because ये हमें US format में चाहिए. तो जैसे ही मैं इसको डेट में करूंगा तो there are no errors and you know I'm fine. But here ये अगला जो आखिरी कॉलम है ना, ये UK फॉर्मेट मुझे चाहिए. अगर मैं यहाँ पे US फॉर्मेट करूंगा ना तो it's not going to work because US वाले जो है ना वो मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं.
और पाकिस्तानी और यूके वाले जो हैं वो पहले डेट तारीख लिखते हैं, उसके बाद फिर मंथ लिखते हैं। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ना डेट, तो ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा यूएस फॉर्मेट पे करने की, एंड देयर आर चांसेस कि इसके अंदर एरर्स हैं। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली क्रॉस ओवर हियर, एंड आई वांट टू चेंज दिस इनटू द यूके फॉर्मेट। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं और यहाँ पर यूजिंग लोकेल के ऑप्शन में जाऊं, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का जो फॉर्मेट है वो मुझे चाहिए। In this case, what I really need is a date of, and the reason it did not give any error is because वो locale उसका English Pakistan है, which is obviously you know the same as UK. But nonetheless, we are going to go to English, and if I could just find UK. ये रहे, ओके, ये देखें, ये बता भी रहा है कि कैसा वो दिखेगा। पहले तारीख है, उसके बाद फिर मंथ है, उसके बाद फिर साल। There you go. So strangely, there are errors here, and I would really like to address this because there should not really be errors. Let me see. And कैसे पता चले कि errors है? जब भी errors होंगे ना, तो ये सुर्ख सा निशान आ जाएगा ऐसे। तो सुर्ख से निशान पे जब भी मैं कहूँगा तो ये बता देगा कि less than 1% there are errors. Look here, yes, इधर भी errors are. ये. So now there's an NM value right across this field, and I would really like to address this because the 28 में अगर देखें ना सारे NA आ रहे हैं. I don't really need this. Let me just cross this over, और इधर मैं काम कर सकता हूँ. 28 ये है 26 रो which is all empty. So I need to fix this first. इसको मैं filter out कर देता हूँ. If I type in 26 here, तो 26 चला गया. 26 ये यहाँ से मैं इसको फिल्टर आउट करके यहाँ से बंद करूंगा, ओके करूंगा. एक वो चला गया. There's one more null value that I can see, that I would, ये 28 के अगेंस्ट सारी null value आ रही है. It is giving us great bit of trouble. I don't want this as well. 28 तो इसको भी मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ. 28 को यहाँ से टिक किया, फिल्टर आउट किया, एंड ऐसे ओके, एंड नाउ वी आर फाइन. आई थिंक should be fine really, but we now एक और तरीका भी होता है इसको लोकेल इसका बदलने का. you just right click over the top of the column, and then you say that you want to change type and using locale, and now you can see the option state, and यूके में हम करना चाह रहे हैं. एंड नाउ वी आर फाइन. देखिए कोई एरर नहीं है इसके अंदर, जब आपकी फाइल बिल्कुल साफ है. सो वन थिंग दैट आई डिड मेस अप वाज कि मैंने अंदाजा नहीं किया कि पहले कॉलम में दो ऐसी रोज थी दैट आई नीडेड टू फिल्टर आउट. उसकी वजह से मुश्किल ये पेश आई मुझे कि काफी जगहों के ऊपर ना एनए वैल्यूज को मुझे रिप्लेस करना पड़ा. दैट्स अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज एटलीस्ट हमें पता चल गया कि एनए को कैसे कन्वर्ट करना है. अब आखिरी चीज जो है वो ये है कि वी वांट टू सेव द चेंजेस दैट वी मेड. as soon as they press close and apply, तो ये जनाब आपकी जो फाइल आपने एडिट की है वो सेव हो जाएगी. और राइट साइड के ऊपर अटैच हो जाएगी ये आपका
एक चीज मैं करना चाहूंगा और वो ये है कि रॉ नहीं है ना ये, अब तो ये प्रॉपर है. सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली क्लिक ओवर इट एंड आई कैन चेंज द नेम फ्रॉम हियर. आई कैन जस्ट वांट टू सी to 2017. Now it's going to change the name, and now we can see our file in the data mode as well as the modeling mode. And now we can even bring in some fun stuff. For instance, स्टैक चार्ट को आप लेकर आ सकते हैं. स्टैक चार्ट में आप कुछ चीजें इवैल्यूएट अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो हमारे पास सब पैरामीटर है. फॉर अगर आपके पास रेवेन्यूज हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग रेवेन्यूज इन माय वैल्यूज, एंड दिस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द पिवट टेबल्स डू. और अगर स्टोर इसको अगर मैं देखना चाहूँ बाय 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 व्हाट, बाय ऑर्डर डेट भी देख सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस. बाय स्टोर आईडी भी देखा जा सकता है, स्टोर आईडी, बट अगेन दैट्स नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस. एक्चुअली अभी हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस है नहीं, बट yes, I got to bring in something. So why not order date? Okay, order date को एक्सेस में ले आता हूँ. So there you go. ये आपके पास ग्राफ बन गया. Of course, this is a massive one, and this just does not, make a lot of sense right now, but it can be done. That's all what I'm saying. I guess ये ना line chart इसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा. So very quickly, and this is the last thing. For this recording, this is the last thing. So bear with me, and I'm going to create a line chart. The line chart के अंदर what I can do is sales को मैं values में ले आता हूँ. And now if I bring in order date in axis, it will make a lot more sense. There you go. Okay. ठीक है. But the order date does not look good to me. I would really like to see whether the order date जो है वो proper date format में है या नहीं. Because I think अगर ये proper date format में होती तो it should be broken. But let me just see it. If I want to go back to my editing mode, तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ, और वो ये ऊपर transform data में जाता. I like to see whether I change the order date or not. So wallet tab नहीं दिखा रहा, that is very strange. Let me just go back, try another option, edit query के option वापस करता हूँ. ये अब दिखा रहा है, columns अब दिखा रहा है. So I would just like to say yes. So yeah, it's not changed the dates here. ये डेट फॉर्मेट जो है ना, ये शायद मैं भूल गया हूँ करना. So I'm going to sort of pick both of these and right click and say, अब मैं दोनों को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ ना, इस वजह से कर रहा हूँ इस तरह से डेट एंड देखिए अब डेट फॉर्मेट ठीक है. बाकी फॉर्मेटिंग में जल्दी से देख रहे तो ठीक है कि नहीं. ये ठीक नहीं, ये रिवर्ट बैक होगी आई थिंक बिकॉज़ वी डिलीटेड सम रिकॉर्ड्स. Let me just do this again, and now the formatting looks perfect. So I want to store it, so close and apply एक ही option कर लेता हूँ, and this should do it. ये लीजिए, अब आप अगर देखें तो प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है. डेट तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, चलेगी. There it is. Just try to bring it in axis and there you go. Now you can see कि वो divide कर दिया उसने years, quarters, months and date के अंदर. Values के अंदर of course I would like to bring in sales.
दोबारा कर लेते हैं। बट एक ही साल है चूंकि, इस वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखा रहा। अगर मैं ईयर्स को निकाल दूं तो अब सही तरह दिखा रहा है। क्वार्टर्स का भी अब आपको लाइन चार्ट दिखा रहा है, ठीक है। If I really want to drill in, I can. Let me just zoom this a little. फोकस मोड पे चला जाए तो अगर मैं मजीद इसको ड्रिल करना चाहता हूँ इनटू मंथ्स, तो ये मंथ्स का भी दिखा रहा है। मजीद अगर करना चाह रहा हूँ तो डे का भी दिखा रहा है। That's your line chart. I'm going to talk about charts in detail in some other video, but for now I've covered the basics, जिसमें इंटरफेस है, जिसमें डेटा टाइप चेंज करना है, जिसमें इंपोर्टिंग है चीजों की। So I think this should really cover up 50% of what we've studied till now. तो इसको प्रैक्टिस करें। इसकी फाइल्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल यही फाइल्स अवेलेबल हैं स्लेट पे, उनको डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस इट। सो व्हेन यू कम बैक आफ्टर ईद, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर आपको होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में छुट्टियों के अंदर बनाऊंगा और वो भी अपलोड हो जाएगी। अगर आप इसको देख रहे हो, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी।